So good morning, dear students. This session is all about the Viva questions based on the term 2 examination. So Viva questions we have divided into three parts: on project file, on cash flow statement, and on comparison of financial statements. So here we start the first question from the part of project file. Question number 1. The external examiner can ask a question first of all about your project file is give a brief description of your project file. The project file must have been prepared by all of you. So what you will speak about the project file is my project file consists of specific project. Do remember this word on what? Segment analysis. As you have prepared your file on segment analysis, so you will be saying specific project on segment analysis. The question number 2, which can be asked by the external examiner, is what have you learned from the project work? What is the learning you have from the project work? So you can say, the project has helped me to develop the competence of reading, analyzing, and interpreting the annual report of the business. Okay? Or you can say segment-wise report of the business. And most important for any type of project is it has also helped to understand the practical aspect of accounting. You have learned the practical aspect of accounting by preparing the project file. So this is the learning from the project work, short and crisp answer. Question number 3 says, give a brief description about your specific project. So you can say, first of all, about your company on which you have prepared the project. Okay, which company you have chosen according to your company, the ROI, the return on investment of your company, capital employed by the company, and the revenue from operations. In तीन चीजों का you have to be very attentive: the ROI, the capital employed, and RFO. The formulas you have used to calculate the segment wise reports, the final conclusion written in the file. ये बहुत ही important है, which you all have to remember. Which segment is the top performing segment, and what are the future projections of this company, what this company has planned to go for investment in future in which segment. So final conclusion and future projection must be well known to you. So what you have to do, you have to go through your project file very carefully. Question number 4 that can be asked in the Viva round: what do you mean by business segment? A good question. We are doing segment analysis based project. अब उस project में what do you mean by segment? The examiner can ask. So what you will say, a segment is a separate division of the business. Very important line is this: separate division of business that generates its own revenues. क्योंकि जो भी business segment wise divided होता है, every segment is generating its own revenue. Every segment is creating its own product lines, services, service offerings और geographical locations. Means segmentation हम कर सकते हैं on the basis of product lines, services or even geographical locations, right? So segment is a separate division of the business. Fifth question, give a brief of the company you have selected for the project. Again the same thing, you should know the name of the company. कहीं ऐसा ना हो you are not in a position to know, you are not in a position to tell that what is the name of the company you have prepared the project. Please go through the file carefully. What are the products, services offered by that company, who is the founder of the company, who is the CEO, all the details of the companies on which your project is based, you should be well versed with the things. So these are the 5 basic questions, but there are certain more questions which you can prepare from the project file, like which analysis tool you have used for segment analysis project. अब आपने जो पूरा एनालिसिस किया है अपने प्रोजेक्ट फाइल में, that you must have done on the basis of some tool, some analysis tool. So what is the analysis tool? You will say, I have used
common size statements, or you can say comparative statements. Common size statement can be common size balance sheet, common size profit and loss, and comparative statement can be comparative statement of profit and loss and comparative balance sheet as well. So accordingly you have to tell the answer of the question. Easy hai bilkul. If you will answer these questions, you will be very confident and you will be getting good marks as well. Which segment of your company is the top performing segment and why? अब आपके प्रोजेक्ट से आ गया क्वेश्चन कहां से बोला? From the conclusion. This is the question based on conclusion of your project. Because in the conclusion you must have written, as per my project, this particular segment is the top performing segment. On the basis of what आप बोल रहे हैं ये? Because on the basis of RFO, the revenue from operations is the topmost, the capital employed is well used in the company, and the ROI of the company in that particular segment is the highest. So these are the three criteria you have to use for telling the answer of which is the top performing segment. Please remember. What is the formula you have used to calculate percentage of revenue from operations for a particular segment? अब आपने अपनी फाइल में segment wise revenue from operations की percentage निकाली है. So which formula you have used? So rather than turning the pages of the file and finding for the formula, you should remember the formula. What is the formula? Segment revenue from operations, the segment RFO, जो भी segment आपने लिया है particularly, like if the company is dealing in car segment, in tire segment, in textile segment, and if textile segment is the top performing segment, so segment revenue from operation divided by total revenue from operations. Okay, the total RFO and the RFO of that particular segment into 100. So segment RFO upon total RFO into 100 is the formula. Please remember. Can you also tell the formula for degree for preparing the pie charts? In your project file, you must have prepared some very smart pie charts. And in the pie charts, you have to mention the degree also. That this is 270 degree. This part is 40 degree. Then accordingly, degree wise, you have to project. You must have projected in your project file. So the same formula which you have used for segment RFO upon total RFO into 100, instead of 100 we will write 360 to calculate the degree in the pie charts. ये वो questions हैं which the examiner can ask to test whether the file work is your original work, is it your genuine work, or you have just copied it from somebody and you do not know what is written inside. 10th question, what are the key factors you have considered for analyzing the segment performance? अब सेगमेंट की परफॉर्मेंस को कंसीडर करने के लिए, उसको एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आप लोगों ने विच पर्टिकुलर फैक्टर्स यू हैव कंसीडर्ड? तीनों फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए. द फैक्टर नंबर 1 इज RFO, फैक्टर नंबर 2 इज कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ROI, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. So these are the key factors you have to remember for analyzing the financial performance. एक क्वेश्चन और है हमारा जो लास्ट है, व्हाट इज बिजनेस सेगमेंट एनालिसिस? आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है सेगमेंट एनालिसिस पर, तो व्हाट इज बिजनेस सेगमेंट एनालिसिस? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. इट इज द रिपोर्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी. व्हाट इज सेगमेंट एनालिसिस? रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ अ कंपनी. Whichever the operating segments are there in the company, it is the reporting of that segment. Reporting of what? Reporting of performance. Why? To analyze the financial information in the financial statements of that particular segment to take economic decisions. What is segment analysis? If you ask simply, segment analysis is the critical analysis of the financial performance of that particular segment. So these are the expected questions from the file part, from the portion of the file. And here we are going to start the most important section of the Viva, because majorly the questions will be based on cash flow statement. One or two questions may be from file, but yes, major Viva questions will be based on the most important chapter, that is cash flow statement. First expected question is, what is meant by cash flow statement?
there are three words: cash flow statement. What is cash? Cash is cash and cash equivalent. Flow, movement, inflow, outflow of cash. Statement, the document which covers the inflow and outflow of cash and cash equivalents. तो वही मीनिंग में लिखा है. Cash flow statement is a statement which shows inflows and outflows of cash and cash equivalents. Children have the habit, वो बोलते हैं कि बस inflows and outflows of cash. No, it is not the complete answer. Say inflows and outflows of cash and cash equivalents during an accounting period. Please remember to use the word cash and cash equivalents also. Very, very important, students. So this is a simple definition. You have to just go through, learn it. What are the three activities calculating while preparing a cash flow statement? Question number 2, if you look at. So if you know the answer, it's very, very simple. There are three activities: A, B, and C. What is A activity? Operating activities, money generated from day-to-day operations. B, investing activities, money generated or used in the fixed assets and investments. And C, cash flow from financing activities, the composition of owners funds and borrowed funds, which we will discuss later. But ये तीन definitions, तीन activities के name याद रखने हैं: operating, investing and financing, so that you can get full mark in the Viva and you be very, very confident, because your Viva will play a major role in deciding your marks in practical examination. What is the sum of all three activities? अब हमारी A activity is operating, B activity is investing, and C activity is financing. So what is the sum of operating, investing and financing activities? If I add all these three activities, A plus B plus C, what do we get? If the sum of these three activities is positive, we write net increase. And if the sum of these three activities is negative, we write net decrease. In what? Net decrease or increase in cash and cash equivalents. This is the answer of the sum of these three activities. Same is written, it is either increase or net decrease in cash and cash equivalents. Most expected question of the Viva. Most expected, most important, most expected is this question: what do you mean by cash and cash equivalents? बहुत ही ज़्यादा important question है. 100% it will be asked. So what is the answer? These are three terms you have to remember: short-term, highly liquid investments that are convertible into known amount of cash within 3 months. 3 months means 90 days में जो भी आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएं इनटू द नोन अमाउंट्स ऑफ कैश विद इन 90 days, those are known as cash and cash equivalents. Short term highly liquid investments convertible into known amount of cash within 3 months, that is 90 days, those are cash equivalents. Now next question. Now the examiner can ask, okay, answer you have given very well, learning अच्छी है आपकी, but can you give me any examples of cash and cash equivalents? So you will say, yes, I know very well. Cash on hand, cash at bank, anything which is just like cash is a cash equivalent. So cash at bank, checks and draft on hand, short-term investments. Another name you should remember, marketable securities. So these are current investments or short-term investments. Marketable securities अगर लिखा है तो क्या होगा? Cash equivalent. These are also cash equivalents. And what else, students? Short-term deposits with bank. Any short-term deposit with bank having a maturity period less than 90 days is a part of cash equivalent. So one, cash on hand, cash at bank, checks and draft on hand, short-term investments and short-term deposits with bank. So question number 4 and 5 are most important. Next question, what is meant by cash flow? Cash flow. Cash flow means inflow and outflow of cash and cash equivalents. एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, when does flow of cash arise? When does flow of cash arise?
फ्लो ऑफ कैश कब अराइज हो सकता है हमारा? तो यू विल से whenever a transaction, when a transaction, whenever a transaction, any transaction result in increase or decrease in cash and cash equivalent. किसी भी ट्रांजैक्शन के होने से if cash and cash equivalent increase हो या decrease, that is called, and that time flow of cash will arise. So if the examiner asks when does the flow of cash arise, you will say yes, any transaction if results in increase or decrease, it is flow of cash arising. Next, explain inflow and outflow of cash with an example. Now this question may become a challenge for you because external when asked will ask the questions, you may be confused. With example, so simple, when a transaction result in increase in cash, जब कभी भी transaction के होने से हमारा cash बढ़ जाएगा या cash equivalent बढ़ जाएगा, तो it is inflow of cash. Like machinery sale होगी, तो cash will flow in, the inflow of cash will take place. Market में आप shares issue करोगे, funds will increase, that will increase the cash or the bank balance, तो सर inflow होगा. Debentures का इशू होने से बैंक लोन अगर हम बैंक से लेते हैं, if we raise the loan from the bank, it will increase the cash, so inflow of cash. If cash sales happens, it will also be increase in cash. So inflow of cash के examples are so many, you can put more examples also. Explain outflow of cash with example. So opposite of inflow of cash, when a transaction will result in decrease in cash and cash equivalents. जब ट्रांजेक्शन से इंक्रीज होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज इनफ्लो, और जब डिक्रीज होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट इज आउटफ्लो. एग्जांपल्स, मशीनरी परचेज, डिवेंचर्स रिडीम्ड, लोन रीपेड और कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, एनीवन. नाइन्थ क्वेश्चन, a tricky question, a typical question of Viva, confusing question. What kind of flow will happen under the following situations? अब following situations तो वहां पर पूछेंगे नहीं, but for your knowledge, I have written 3 transactions. Examiner will ask you, tell me, अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो विल इट बी इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश? अच्छा, आपको लगेगा कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा होगा. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ करके हम बिजनेस से निकाल के ला रहे हैं बैंक से, तो हो सकता है इनफ्लो. सेल एंड परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सेल देखते ही यू मे से इट इज इनफ्लो ऑफ कैश, बट प्लीज रिमेंबर, one is cash, another is bank. One is cash, another item is bank. One is cash and another item is marketable security. So in every transaction you can notify कि दोनों आइटम या तो एक आइटम या तो कैश है या दूसरा कैश इक्विवेलेंट है. तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट ही इन्वॉल्व हो, दैट रिजल्ट्स इन व्हाट? नो फ्लो ऑफ कैश. इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि टेल मी वन थिंग, सेल एंड परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी से क्या होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो? भाई हम परचेज कर रहे हैं, तो फ्लो कौन सा होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो? यू कैन से विद कॉन्फिडेंस इट इज नीदर आउटफ्लो नॉर आउटफ्लो, नॉर नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ कैश. व्हाई? if the examiner asks, you can say with full confidence, because one component of cash and cash equivalent is increasing and another component of cash and cash equivalent is decreasing. जैसे कि हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो कैश तो कम हो जाएगा हमारा, मगर दूसरा कंपोनेंट बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो one component is decreasing, another component is increasing, therefore no flow of cash. Please remember these 3 very important events. Children, you may be given a confusion, but you should not be confused at any point of time if you will go through all these questions. Next, yeah, a direct question can be asked, what is sale of machinery at profit or loss? Sale of machine at profit, inflow of cash or outflow of cash? You will say inflow because cash is coming in. The examiner, to confuse you, can ask, if it is sold at a major loss, heavy loss, even then it is inflow. कैश इज कमिंग इन ना, हर हालत में कैश तो आ ही रहा है, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, बट कैश का तो इनफ्लो हो रहा है. परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक परचेज करेंगे, कैश विल गो आउट, आउटफ्लो. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, मनी इज कमिंग इन, तो इनफ्लो.
Cash deposited in bank, no flow, because bank is increasing but cash is decreasing. Both are cash equivalents. Sale of marketable securities, no flow. Why? Because it is a simple reason. Both are cash equivalents. Issue of shares, inflow. Converted debentures into shares. Shares and debentures, two items are involved in this transaction. No cash involvement, so no flow. इसको as a footnote you can show under cash flow statement, but not in the cash flow statement at all. Cash paid to trade payable, no flow. Cash paid to trade payable will be what? No flow or outflow? It will be outflow, children. Please be very careful, because cash received from trade payable is a inflow, cash paid to trade payable is a outflow. It is not no flow. No flow happens only when cash and cash equivalents are involved in the transaction. Repayment of loan taken. अगर आप रीपे कर रहे हो लोन को तो इट इज आउटफ्लो. बैंक ओवरड्राफ्ट आप रेस कर रहे हैं, अपना बढ़ा रहे हैं, तो इट इज इनफ्लो, बिकॉज फंड्स आर कमिंग इन द बिजनेस. Another very important question, the 11th question, what do you mean by operating activities? Are three important words you have to remember. Principal revenue generating activities. Principal revenue generating. If you are doing mobile business, तो मोबाइल के बिजनेस से जो भी कैश सेल्स हो रहा है आपका मोबाइल्स का, एंड जो परचेज कर रहे हैं आप मोबाइल्स का, उससे जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. And some examples of operating activities, meaning to you have learned very well, but what are some examples? So examples में आप indirect method सुनाने नहीं बैठेंगे. You will say cash sales of the goods, okay, the sale of goods for cash, cash received from debtors if you have sold some credit, cash purchases on goods. Purchases means purchasing of goods only, okay. Payment to creditors is a operating activity. Payment of all operating expenses is a operating activity. So you can accordingly give the examples if the examiner asks. 13th question, what do you mean by investing activities? Very important word you have to remember. All those activities which are related to purchase and sale of long-term assets and purchase and sale of long-term investments. Two terms you have to remember. Purchase and sale. Second term, long-term assets and investments. That's all. That is investing activities. Go through these questions, answers, and you can gain great confidence. 14th, examples, purchase of intangible and tangible assets. Goodwill का purchase भी investing होता है. That is why I have written intangible assets of. Purchase and sale of investments, long-term, short-term loans, advances. अगर long-term loan grant करेंगे तो it will be माइनस, एंड लॉन्ग टर्म लोन अगर आपका रिकवर होगा या शॉर्ट टर्म लोन रिकवर होगा तो एडेड. अब यहाँ पर दो आइटम्स हमने और दिए हैं. एग्जामिनर कैन आस्क, अच्छा ये बताइए कि परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड टेंजिबल एसेट्स के अलावा और क्या आ सकता है. तो यू हैव दीज थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स, द लास्ट थ्री इवेंट्स, द लास्ट थ्री ट्रांजैक्शंस व्हिच यू कैन से यस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रेंट रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. So accordingly, but don't be confused कि these we have to minus also in operating activity as per indirect method. What do you mean by financing activities? Increase and decrease, all those activities which result in increase and decrease in the amount and composition of owners funds and borrowed funds. ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे या तो ओनर फंड इंक्रीज हो या बोरोड फंड्स इंक्रीज हो, या ओनर फंड्स डिक्रीज हो या बोरोड फंड्स हमारा डिक्रीज हो. तो जब भी कभी ओनर फंड्स और बोरोड फंड्स हमारे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, उनका साइज, उनका कॉम्पोजिशन चेंज होता है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके, लाइक issue of shares capital, issue of debentures, bank loan taken, repayment of loan will be minus, redemption of debentures will be minus, interest on debentures paid will be minus, and dividend paid will also be minus. Interim dividend ho, proposed dividend ho, all dividends paid will be minus under financing activities. अब dividend पर आते हैं. Dividend पर based there are certain things. So 17, 18, 19, 20, I have tried to give you the clarity on the points of dividend only. What is proposed dividend? It is the final dividend proposed by the company at the end of the year and approved by the shareholders. It is paid both on equity and preference shares.
तो डिविडेंड प्रपोज बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम में ये प्रपोज होता है, अप्रूव करते हैं डायरेक्टर्स, एंड इट इज टू बी पेड. ओके, सो इस साल हमारा ये प्रपोज होता है, अगले साल ये हमारा पे ऑफ हो जाता है. What is the accounting standard that governs the point of proposed dividend? Please remember, this is an important question, children. AS4. Cash flow statement is prepared as per AS3 revised. Cash flow statement, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू विल से AS3 रिवाइज्ड. लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, तो यू विल से इट इज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, हाउ टू डील विद द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर. यू कैन से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर इज कंसिडर्ड एज डिविडेंड पेड, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होता है, एंड करंट ईयर डिविडेंड इज नॉट टू बी अकाउंटेड बिकॉज ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है. इट कैन बी पेड और इट कैन नॉट बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. तो इसको कभी भी हम कैश फ्लो अकाउंट स्टेटमेंट में शो नहीं करते. करंट ईयर वाला हमेशा इग्नोर करना है और लास्ट ईयर वाला डिविडेंड हमेशा हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? डिक्लेयर्ड, it is that dividend which is declared by the board of directors of a company before the conduct of AGM. एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले कंपनी एक डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर देती है ड्यू टू सरप्लस प्रॉफिट और एनी अदर रीजन, that is interim dividend. And please remember, one more question can be asked, can we pay interim dividend on preference shares? You will say no, it is not to be paid on preference shares, it is paid on equity shares only. And still if the examiner asks, why can't we pay on preference shares? You will say because preference share dividend is always fixed, that is why it is not paid. Next, why non-operating expenses and incomes are added back and subtracted from the net profit before tax. आप जब इनडायरेक्ट मेथड करते हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हो और इनकम्स को माइनस करते हो, रिवर्स चलते हो. ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो? यू विल से बिकॉज जो नेट प्रॉफिट हमारा एज पर P&L अकाउंट होता है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल कैश अवेलेबल. तो हमें क्या जानना होता है? व्हाट इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. दैट इज व्हाई all non-cash things are to be added and operating incomes are to be subtracted. What is the reason? To get cash generated from operations. Please remember, हम reverse क्यों करते हैं? To get the cash generated from operations. Why? Because net profit is not the actual cash generated. And otherwise also, ये जो items होते हैं non operating and non cash, these are shown under either investing activities or under financing activities. So please be prepared for the answer of 21 question as well. Can you give some examples of non-cash and non-operating expenses? You know very well. Non-cash में depreciation, amortization, provision for doubtful debts means for whom we don't pay any money or which are not related to day-to-day operations. So those are considered as non-operating. Simple questions थे ये दो. What do we get after adding non-operating expenses and non-operating expenses and non-operating incomes to get net to the net profit before tax? So NPBT में we add up, in the NPBT we add up non-operating expenses and non-cash expenses. Okay, and we subtract what? We subtract non-operating incomes. Children, tell me, why do we do that? What do we get after doing this exercise? We get operating profit before what? Working capital changes. Very good. Working capital changes. और फिर इसके बाद हम करते हैं इसी में, so this is the answer of this question. Otherwise you must be knowing increase in CL and decrease in CA, और less करते हैं इसका opposite, and accordingly we get the cash generated from operations and we subtract tax paid, less of tax refund, and we get the final answer of operating activities. Anyways, 24th question. How would you treat the following for finance company? बहुत ही important. Again an important and a typical question. बताइएगा, फाइनेंस कंपनी अगर इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पेड बाय द फाइनेंस कंपनी द व्हाट एक्टिविटी? फाइनेंस कंपनी तो डेली फाइनेंस में करती है, तो यू विल से इट इज ऑलवेज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी.
Interest received by a finance company on investment, you will say with full confidence, operating activity. Dividend received by the finance company on the investments, you will say operating activity. Because why operating activities? These are for finance company a regular routine. So that is why they deal in finance day and night. So that is for the reason we go for the operating activities only. How would you treat the dividend paid for a finance and a trading company? Again, a very important question. एक ऐसा एक्टिविटी बताओ which is financing for both the companies. ट्रेडिंग हो कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी हो या फाइनेंस कंपनी हो, ऐसी कोई एक इवेंट बताइए. तो यू विल से इट इज डिविडेंड पेड. इट विल ऑलवेज बी शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऐसी एक्टिविटी डिविडेंड पेड है which is always and always a financing activity, whether it is a finance company or a non-finance company, you can say trading company. दोनों के लिए ये हमेशा कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is there. How would you treat dividend paid for a finance company? फाइनेंस कंपनी के लिए भी हम फाइनेंसिंग मानेंगे, और ट्रेडिंग कंपनी जो फाइनेंस में डील नहीं करती, जो गुड्स में डील करती है, उसके लिए भी हम फाइनेंसिंग ही मानेंगे. तो 25th इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब जिस तरह से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 के, फाइनेंस कंपनी के लिए वो 3 आइटम आप कैसे डील करोगे, तो बताओ ट्रेडिंग कंपनी के लिए कैसे डील करोगे. देयर इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी विच डील्स इन गुड्स, लाइक इंटरेस्ट पेड इन ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग. एक कंपनी जो गुड्स में डील करती है, जो टेलीविजन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है, अगर वो बोरोइंग्स पे कर रही है तो उसके लिए ये ऑपरेटिंग नहीं हो सकता. फाइनेंस के लिए ये ऑपरेटिंग हो सकता है. तो इसके लिए ये कौन सी एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इट इज रिटन इन द आंसर. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, भाई आपने कहीं इन्वेस्ट करा आउटसाइड द बिजनेस, वहां पर से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और यही अगर फाइनेंस कंपनी के बारे में पूछेगा तो इट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. यही अगर आपसे फाइनेंस कंपनी के बारे में पूछेगा, यू विल से इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेकिन फॉर द नॉन फाइनेंस कंपनी इट इज डिफरेंट. The 26th question is again a very typical one and an important one. How would you deal with the goodwill when increases and decreases in the last year? तो goodwill सपोज करिएगा अगर आपका लास्ट ईयर 2022 and 21 2 year amounts are given, say 1 lakh and 2 lakhs, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज है तो इट इज परचेज ऑफ गुडविल एंड विल बी शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अगर गुडविल इंक्रीज होता आपको नजर आता है. और इसके रिवर्स अगर यहीं पर होता ये 22 and 21 एंड इट इज 50,000 से 20,000, तो 30,000 रुपीज का गुडविल डिक्रीज हुआ, इट इज गुडविल व्हाट? रिटर्न ऑफ, और यू कैन से अमोर्टाइज्ड. ओके, so goodwill written off is always a part of what? Non-operating expense and shown under operating activities. So decrease wala goodwill, operating activities. Increase wala goodwill, investing activities. Good question. Can you tell any such transaction? 28th question. Can you tell any such transaction which can be shown under investing and financing both? This is the most challenging question for a class 12th student. Most challenging question. Why I am saying most challenging? कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ which can be shown in both the activities. You will be highly confused. कि ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए जो इन्वेस्टिंग में भी आए और सर फाइनेंसिंग में भी आए. How it is possible? So machinery purchased on hire purchase system. Any fixed asset अगर आप EMI बेसिस पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेते हैं, तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे करने का नंबर आता है तो इंस्टॉलमेंट में हमेशा 2 अमाउंट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक कौन सा अमाउंट होता है उसमें? इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज की, इसको आपने 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और कंपनी आपसे कहती है अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो सर यू हैव टू पे 1,25,000 इन 5 इंस्टॉलमेंट्स. ओके, तो 25,000 की आपकी एक इंस्टॉलमेंट बनती है. इस 25,000 में 20,000 रुपीज तो प्रिंसिपल है. ओके स्टूडेंट्स, और 5,000 इसमें क्या है? इंटरेस्ट है. तो जो ये प्रिंसिपल का अमाउंट है ये तो कौन सी एक्टिविटी है आपकी? इन्वेस्टिंग. और जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप इस मशीन की इंस्टॉलमेंट पर, दिस इज योर व्हाट एक्टिविटी? फाइनेंसिंग. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि अगर हम कोई भी फिक्स एसेट अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पर लेते हैं, हायर परचेस पर लेते हैं,
तो इन दैट सिचुएशन जो हमारी ईएमआई जाएगी उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो इन्वेस्टिंग है और उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट इज योर फाइनेंस. सिंपल टू अंडरस्टैंड. 29. हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ टैक्स. टैक्स रिफंड आपको पता है सरप्लस में सबसे पहले हम माइनस करते हैं, यानी कि टॉप जब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने वाला होता है, और टैक्स पेड में से माइनस भी करते हैं जब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से टैक्स पेड माइनस कर रहे होते हैं. और टैक्स पेड का क्या ट्रीटमेंट है? डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, टैक्स पेड इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. तो रिफंड का ट्रीटमेंट तो सरप्लस में से माइनस और टैक्स पेड में से माइनस, और टैक्स पेड का ट्रीटमेंट सिंपल है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से हमेशा माइनस होगा. आंसर निकालने से पहले जब हमारा फाइनल आंसर आने वाला होगा कौन सा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो ऑपरेटिंग में आते हैं टैक्स हमेशा और किसी एक्टिविटी में नहीं जाएगा. कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज वेदर फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी? तो आपको हम डिस्कस कर चुके हैं. इट इज डिविडेंड पेड, ऑलवेज एंड ऑलवेज अ फाइनेंस एक्टिविटी वेदर फाइनेंस कंपनी और अ नॉन फाइनेंस कंपनी. Again, an interesting question. Loans and advances granted by a company will be shown under which activity? You will say it will be shown under investing activities. Loans and grant advances ये बहुत कम हमारा questions में है, हमारे जो books हैं हमारी. तो that is why loans and advances पे वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ अगर कंपनी लोन किसी को ग्रांट करती है तो इट इज शोन अंडर विच एक्टिविटी? यू विल से इन्वेस्टिंग. इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी. शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखते ही बच्चा बोलेगा सर ये तो ऑपरेटिंग में जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड या लेस होता है. बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं हमारे? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट. यस, यू आर राइट. So in these items we will always consider them under financing activity. Increase add होगा और decrease minus होगा. Sale of marketable securities at par will result in inflow, outflow or no flow of cash. Already discussed. Marketable securities are cash equivalent and converted into cash. So both are cash and cash equivalents, no flow. Absolutely right answer. 33. And last two questions. Where would you show the issue of share for the purchase of machine? कितना important और कितना बड़ा इवेंट है. आपने सपोज 5 करोड़ रुपीस का एक मशीन परचेज करा और 5 करोड़ रुपीस के आपने शेयर्स इशू कर दिए. तो कितना मेजर ये एक इवेंट होता है. 5 करोड़ रुपीस you have issued the shares and 5 crore rupees machine you have purchased. Against the purchase of this machine you have issued shares. Where will we record in the cash flow statement? It will be no flow of cash, therefore nowhere it will be shown in the cash flow statement. कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है मगर कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं होगा. एज ए फुट नोट आप दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद कि कंपनी हैज इशूड, दैट इज अनदर थिंग, बट कैश फ्लो में ये कहीं नहीं आता है. लास्ट क्वेश्चन. हाउ वुड यू डील विद द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? एसपीआर अगर इंक्रीज होगा तो कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग. और एसपीआर अगर डिक्रीज होगा तो ये कहीं नहीं आता कैश फ्लो में, बिकॉज इट मींस इट इज यूज्ड टू राइट ऑफ सम expenses like discount on loss on issue of shares or used to pay the premium on redemption of debentures. That is why decrease in SPR ignore होता है, increase in SPR financing activity में आता है. I hope these 35 questions will help you to gain great confidence over the concept of cash flow statement. So these 35 questions, if you are confident, you can very well handle any other type of Viva question. Last topic on which I have prepared only 5 questions, that is comparison of financial statements. Normally this type of questions may be asked. What are comparative statements? Horizontal analysis also it is known as. So what are comparative statements? You can say it means comparative study of various component of financial statements. Financial statements कौन से होते हैं? There are two financial statements. One is statement of P&L, from where we get the profit, the income statement. Second is the balance sheet, the position statement. So in दोनों statement का जो comparative study है, that is called comparison of financial statements. The statement of P&L and the comparative balance sheet. It is also known as time series analysis. 1 mark question can be asked in the Viva. What do you mean by time series analysis? You can say this is the comparative study of various component of financial statement for number of years. That is time series analysis. So comparison
of financial statement is an easy chapter for you, but theoretically बच्चों को challenge आ जाता है. That is why I have written questions. Otherwise, this is easy to understand. What do you mean by common size statements or vertical analysis? It means statements in which individual items of financial statements are converted into percentage. हर आइटम को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग अ कॉमन बेस. अब वो कॉमन बेस क्या होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में? इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यू कैन से आरएफओ इज द कॉमन बेस फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज. जैसे कि अगर हमारा एक्सपेंस है उससे परसेंटेज निकालनी है तो एक्सपेंस अपॉन आरएफओ इंटू 100. अगर हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट है एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो एम्प्लॉय बेनिफिट अपॉन आरएफओ. अगर अदर इनकम है तो अदर इनकम अपॉन आरएफओ. एवरी टाइम आरएफओ इज द बेस टू कैलकुलेट द परसेंटेजेस मल्टीप्लाइड बाय 100 एवरीवेयर. तो व्हाट इज द कॉमन बेस इन कॉमन साइज स्टेटमेंट्स? आरएफओ. ओके. एंड बैलेंस शीट अगर हम कॉमन साइज बना रहे हैं तो व्हाट इज द कॉमन बेस? टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. जैसे कि हमसे बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ से शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल अपॉन total of balance sheet. Balance sheet means total of either liabilities or total of either assets into 100. बोलता है long term borrowings का percentage निकालो. You will say long term borrowings divided by total of the balance sheet multiplied by 100. So this is the way we have to calculate the percentages for these different things. So I hope you can confidently speak about common size income statements. This technique is also known as what, students? This is also known as cross-section analysis, or you can say vertical analysis. So time series analysis, vertical analysis, cross-section analysis. Be careful कि जब आप comparative के बारे में बात कर रहे हैं या you are talking about common size. Okay. So this is how we have to go about. What is intra-firm comparison? You know very well. When you compare your own performance with previous years, that is called intra-firm comparison. Own performance of one period with another period of the same firm. What do you mean by inter-firm comparison? When you compare your performance with similar business. If you are, if Maruti will compare its performance with Hyundai, so in that situation, Maruti will compare its performance with Hyundai company. It means that is not intra-firm, that is inter-firm comparison. If MRF will compare its performance with Seat tires, it is inter-firm comparison. And if MRF company will compare its own performance with previous year, that is intra-firm comparison. Last question of the Viva: what are the formulas to be used for calculating percentage in case of comparative income statement and common size income statement? That I have already discussed. You know very well the formulas. Absolute change कैसे निकालते हैं? Current year amount minus previous year amount. Okay. And percentage कैसे निकालते हैं comparative income statements या comparative balance sheet में? Numerator is absolute change and denominator is the previous year amount, the base year amount. For example, say RFO है हमारा 2 लाख से हमारा हो रहा है 3 लाख. तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा हमारा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. व्हाट इज करंट ईयर अमाउंट? 3 लाख. 3 लाख माइनस 2 लाख इज 1 लाख. दिस इज एब्सोल्यूट चेंज. एंड नाउ परसेंटेज चेंज निकालना है आपको. तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट. व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज? 1 लाख. What is the previous year amount? This is like previous year. Say for example 21. This is 22. So 2 lakh is the previous year amount. 1 lakh is the absolute change multiplied by 100. So you can say the percentage is 50%. Simple. And in common size income statement, I have already discussed. I have shown the practical example. Individual item of that particular year. Say अदर एक्सपेंसेस का हमें निकालना है परसेंटेज. तो अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय RFO into 100. Suppose this is 20,000 and RFO is 1 lakh. So 120 of this is how much percent? 20%. This is how we calculate the percentage for the common size income statement. I hope the session was fruitful for all of you, and after doing this complete exercise, you can confidently
most confidently handle the questions based on this concept of Viva, and I'm sure you will be able to do very well in the Viva questions. And one more thing is there, that is direct method, which is not in the theory course, theory papers, but yes, it may be asked in the practical written examination. For that you have to remember, इसमें आपको डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है कि कैश सेल से आपके पास कितना पैसा आया. सपोज यू हैव रिसीव्ड 2 लाख फ्रॉम कैश सेल ऑफ गुड्स. कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स, आपको डेटर से मिला 1 लाख रुपीज. दिस इज टू बी एडेड. अब पेमेंट कहाँ कहाँ करा आपने? फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, सपोज यू हैव पेड 50,000, so that you have to minus. कैश पेमेंट करा ट्रेड पेबल को, मे बी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, किसी को भी पेमेंट आपने किया, से फॉर एग्जांपल 10,000, दैट यू हैव टू माइनस. आपने कोई सैलरी पे करी, कोई वेजेस पे करा वर्कर्स को, से 20,000, दैट ऑल्सो वी हैव टू माइनस. अदर एक्सपेंसेस पे करे, लाइक बैंक चार्जेस, लाइक कैरेज, like any other charge, insurance, advertising. So suppose 10,000, that also to be minus. And you have paid the tax, less of tax refund, say 15,000. So all those things you have to minus. यानी कि इसमें क्या करना होता है डायरेक्ट मेथड में, स्ट्रेट अवे यू हैव टू just add all the items which are resulting in inflow of cash and subtract all the items which are resulting in outflow of cash, and accordingly you will get the answer. Like in this case, 3 lakh is the total cash in, and 60, 20, 80, 90 and 1 lakh 5,000 is the cash out. So from 3 lakh, if you subtract 1 lakh 5,000, it will result in 1 lakh and 95,000. So it will be 3 lakh is greater. So you can say cash flow from operating activities. We will not write used. The answer will be 1,95,000. So direct method, if asked in the examination, written examination, you can also confidently handle the direct method also. Very, very simple. Indirect it is a little twisted, but direct is very, very simple. So all the best for the practical examination, and I'm sure you will do very well in the practicals. Thank you.